Good evening, everyone. My name is Mamalin Mohanty. I'm a second year MBBS student at SCB Medical College and Hospital. I had cleared NEET with All India rank of 2101. So I welcome you all to today's Ask Me Anything session on biology. Okay. So we have received immense response from you, and I have selected 15 sort of questions from them, which I will be answering in this session. Okay. So let's start. So first question we have function of nephron in the kidney. First, we'll know what is nephron. Nephron is the structural and functional unit of kidney. Okay, so it is the structural and functional unit of kidney. So here you can see kidney. These are the pyramids, and each pyramids contain nephron. Okay, ये पिक्चर अगर हम जूम करेंगे then this is the pyramid. Okay, and this is nephron. First हम नेफ्रॉन का each and every part देख लेंगे, then उसका फंक्शन उसके बाद देख लेंगे. First one, it is glomerulus. Okay, this part is Bowman's capsule. Glomerulus plus Bowman's capsule together known as renal corpuscle. Okay, this part it is PCT, that is proximal convoluted tubule. Then उसके बाद it is Henle's loop. Okay, or loop of Henle. So this is the descending loop. ये नीचे जा रहा है, right? This is the descending limb. This one is the ascending limb. Ascending limb में तुम देख सकते हो, one is thin segment, another one is thick segment. This is the thick segment. This one is thin segment. Okay. Then ascending limb के बाद we have DCT. DCT means distal convoluted tubule. Okay. Then distal convoluted tubule आगे जाके collecting duct इसके साथ join होता है. Okay. So now first देख लेंगे हम क्या? The structure that actually produce urine in the process of removing waste and excess substances from the blood is known as what? Nephron. ये क्या करता है? ये actually हमारा जो urine produce होता है, ये nephron में produce होता है. Okay. Now we'll see what are the steps in formation of urine. Okay. First step is known as filtration. That means ये this one is afferent arteriole. Okay, this is efferent arteriole. Okay, ये ग्लोमेरुलस में जो ब्लड होगा वो फिल्ट्रेट होके कहाँ पे जाएगा? बाउमन्स कैप्सूल में. ओके, सो यूरिन फॉर्मेशन. What are the steps? First one is filtration. Okay, यहाँ पे तुम देख सकते हो that renal corpuscle जो कि glomerulus and Bowman's capsules दोनों मिला के बने हैं. Okay, इसका फंक्शन ये है that it will generate the glomerular filtrate which is composed of water, ions and small molecules. You can note that there is no filtration of protein. Protein इसमें filtrate नहीं होता है generally. Okay. Next one is ये हो गया first step which is filtration. Second one it is reabsorption. Okay. Reabsorption means ये जो blood vessels होगा इसमें जो molecules वो reabsorb होगा किस sorry ये जो tubule है इसमें से molecule reabsorb हो जाएगा blood vessels में, which is reabsorption. Then next step it is secretion. That means blood vessels, blood से
मॉलिक्यूल्स ट्यूबुल में सीक्रेट होगा. ओके, थर्ड स्टेप इज सिक्रेशन. एंड लास्ट वन इज एक्सक्रेशन. यूरिन, ये हो गया फॉर्मेशन का 3 स्टेप. वन इज फिल्ट्रेशन, सेकेंड वन इज रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड वन इज सिक्रेशन. ओके, देन यूरिन एक्सक्रेट हो जाएगा. ओके, ये नेफ्रॉन में ये 4 मैकेनिज्म व्हिच इज फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन एंड एक्सक्रेशन, ये नेफ्रॉन में होता है. ओके, तो नेक्स्ट वन, नेफ्रॉन और क्या करता है? ये जो यूरिन फॉर्मेशन का रेट है उसे एडजस्ट करता है. एंड कैसे एडजस्ट करता है? जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा. ब्लड प्रेशर हाई मीन्स ब्लड वॉल्यूम ये भी हाई रहेगा, राइट? जब ब्लड वॉल्यूम भी हाई रहता है तो ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज हो जाता है, देन ये रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो कि ट्यूबल से ब्लड वेसल ये डिक्रीज हो जाएगा एंड सिक्रेशन प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा, सो दैट मोर टू मोर यूरिन फॉर्मेशन एंड एक्सक्रेशन हो, राइट? जब हमारा बीपी लो हो जाएगा, देन वी नो दैट नेफ्रॉन में जो कि एक जेजी apparatus है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus, वो क्या रिलीज करता है? रेनिन. ओके, जब बीपी लो हो जाएगा देन रेनिन रिलीज होगा. रेनिन क्या करेगा? वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल आई मीन डीसीटी से Na+ एंड H2O क्या कर लेगा? रीअब्सॉर्ब कर लेगा. ओके, तो फिर हमारा ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा एंड ब्लड प्रेशर भी हमारा जो डिक्रीज हुआ था वो फिर से बढ़ जाएगा, राइट? नेक्स्ट स्टेप इज इन प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल. इसमें क्या होता है देख लो. इट रीअब्सॉर्ब्स सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम एंड फॉस्फेट. ओके, ये रीअब्सॉर्ब हो जाएगा. ओके, 90% ऑफ रीअब्सॉर्प्शन हमारा पीसीटी में हो जाता है. एंड सीक्रेट, ये क्या सीक्रेट करेगा फिर से ट्यूबुल में? वन इज अमोनियम, सेकेंड वन इज क्रिएटिनिन. नेक्स्ट, लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले में ओनली जो कि डिसेंडिंग लूप है. डिसेंडिंग लूप क्या होता है? जो ये इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट बट इट परमेबल टू वाटर. ओके, सो इट रीअब्सॉर्ब वाटर डिसेंडिंग लिम्ब में. और जो असेंडिंग लिम्ब होता है वो इसका ठीक ऑपोजिट होता है, जो कि इट इज इम्परमेबल टू वाटर बट इट इज परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स. ओके, तो इसमें क्या रीअब्सॉर्ब होता है? वन इज सोडियम, सेकेंड वन इज क्लोराइड, राइट? नेक्स्ट, लूप ऑफ हेनले थिक असेंडिंग लिम्ब में भी ये हो गया थीन में. इस पार्ट में सोडियम एंड क्लोराइड रीअब्सॉर्ब होता है एंड थिक असेंडिंग लिम्ब में अमोनियम, सोडियम एंड क्लोराइड. नेक्स्ट अप वी हैव डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल. इसमें भी सोडियम एंड क्लोराइड रीअब्सॉर्ब हो जाता है. ओके, तो बैक टू ब्लड वेसल्स. देन कलेक्टिंग डक्ट में जब हमारा यूरिन लास्ट कलेक्टिंग डक्ट में ओके रहता है यूरिन, इसमें लास्ट रीअब्सॉर्प्शन होता है किसका? सोडियम, क्लोराइड एंड वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं इसमें. ओके, और सिक्रेशन किसका होता है? सिक्रेशन होता है वन इज हाइड्रोजन आयन, सेकेंड वन इज पोटेशियम एंड अमोनियम. अमोनियम, हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम. ओके, तो now we'll see what are the types of nephron. Okay, what are the types of nephron? Nephron is of two types. One is cortical nephron, second one is juxtamedullary nephron. Okay, if we'll see the parts of kidney, upper one is cortex, उसके बाद this is cortex, this is outer medulla. ओके, आउटर मेड्यूला का दो पार्ट होता है. वन इज इनर स्ट्राइप, सेकेंड वन इज आउटर स्ट्राइप. दिस इज इनर स्ट्राइप, दिस इज
outer stripe. And last up we have inner medulla. Okay, तो जो cortical nephron होता है वो extend होता है up to this is related to the collecting tubule. Okay, ये जो लूप ऑफ हेनले होता है वो आउटर स्ट्रिप तक एक्सटेंड होता है. किसमें? कॉर्टिकल नेफ्रॉन. बट इन जक्स्टा मेड्युलरी नेफ्रॉन जो लूप ऑफ हेनले है वो इनर मेड्युला तक एक्सटेंड करता है. ओके, राइट. तो जो जक्स्टा मेड्युलरी नेफ्रॉन, दिस वन इज जक्स्टा medullary, this is cortical. Juxtamedullary, it is present in 15 to 20% of nephron. Okay, and जो cortical nephron हुए वो बाकी ये maximum, that is 80% of nephron are cortical type of nephron. Okay, they are small in size, the loop of Henle is small in size and they are fully functional under normal condition. Okay, so next question we have mechanism of enzyme action and regulation. Again, first we'll understand what is enzyme. Enzymes, they are generally protein. Okay, हम ये भी देखेंगे that कुछ राइबोजाइम्स जैसे कि आरएनए है जो कि एंजाइम की तरह काम करता है but they are not proteins. Okay, so enzymes are generally proteins. It can be defined as the biological polymer. They are biological polymer which catalyze a biochemical reaction, that catalyze a biochemical reaction. Okay, that means this one you can see it is a enzyme. Okay, enzyme, it has a active site. This is substrate. जैसे कि तुम एक ऑर्गेनिक रिएक्शन में तुम देखे होगे वन इज रिएक्टेंट एंड इट विल कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट. इसी तरह यहाँ पे सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट में ज्वाइन होता है. ओके, देन उसके बाद वो क्या फॉर्म करता है? दिस इज एंजाइम, दिस इज सबस्ट्रेट. सो द कॉम्प्लेक्स इज नोन एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. ओके, देन ये सबस्ट्रेट इट विल चेंज टू प्रोडक्ट, देन it is known as enzyme product complex. then क्या होता है? प्रोडक्ट लीव कर जाता है एक्टिव साइट, एंजाइम की एक्टिव साइट से प्रोडक्ट देन लीव कर जाता है. ओके, देन वी हैव सबस्ट्रेट, देन वी हैव फ्री प्रोडक्ट्स. ओके, तो मैकेनिज्म क्या क्या रहता है तुम एक बार देख लो. फर्स्ट वन इज, 4 मैकेनिज्म रहता है जो कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए. First one is core mechanism. First one is acid base catalysis. Second one is covalent catalysis. Third one is electrostatic interaction. Electrostatic interaction. And fourth one is desolvation. Okay, you only have to know the names. Okay, next we will see कैसे regulation, ये एंजाइम जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वो रेगुलेट कैसे होता है. फर्स्ट वन इज एलोस्टेरिक रेगुलेशन. देन वी विल सी व्हाट इज एलोस्टेरिक रेगुलेशन. एलोस्टेरिक, एक होता है एलोस्टेरिक साइट, दिस वन इट इज द एक्टिव साइट. एलोस्टेरिक साइट क्या होता है? देन इट इज बाइंडिंग ऑफ ए मॉलिक्यूल एट ए साइट अदर देन द एक्टिव साइट. दैट मीन्स अगर ये मॉलिक्यूल आके कहीं पे भी अटैच होगा एक्सेप्ट फॉर एक्टिव साइट, देन इट इज नोन एज एलोस्टेरिक साइट.
Okay, other than active site is known as allosteric site. Then one term is activator, जो कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है अगर उसे इंक्रीज कर देता है, दैट मींस अगर एनहांस कर देता है, देन विल कॉल इट एज ए एक्टिवेटर. देन इनहिबिटर इसके ठीक ऑपोजिट, व्हिच इज ये एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देगा. ओके, देन वी विल सी टू टाइप ऑफ इंटरेक्शन. वन इज टू टाइप ऑफ इनहिबिशन. ओके, जो इंटरेक्शन होता है वन इज एक्टिवेटिंग, वन इज इनहिबिटिंग. ओके, इनहिबिशन में ही एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, सेकेंड वन इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, एंड जो कि तुम्हें अभी लाइक नहीं चाहिए तुम्हें, दैट इज फीडबैक इनहिबिशन. ओके, फोकस ऑन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन मीन्स अगर एक मॉलिक्यूल जो कि मिमिक करेगा सबस्ट्रेट को, दैट मीन्स इसका साइज एंड शेप बिल्कुल ही सबस्ट्रेट की तरह होगा, एंड वो आके एंजाइम की एक्टिव साइट में बाइंड कर लेगा. ओके, अगर वो मॉलिक्यूल जो कि फॉरेन मॉलिक्यूल है वो अगर आके एक्टिव साइट में बाइंड कर लेगा, देन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम कॉम्प्लेक्स वो फॉर्म नहीं हो पाएगा, एंड रिजल्टिंग प्रोडक्ट भी फॉर्म नहीं हो पाएगा. ओके, तो ये क्या हो गया, इनहिबिट किया, प्रोडक्ट फॉर्मेशन को इनहिबिट किया बट कॉम्पिटिटिव वे में. दैट मीन्स वो सबस्ट्रेट के साथ वो कंपटीशन कर रहा है, क्योंकि उसका साइज एंड शेप बिल्कुल ही सबस्ट्रेट की तरह है, तो वो आके एक्टिव साइट में बाइंड कर लेता है. ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है इसमें, इनहिबिटर compete with the substrate, it will bind to the active site blocking substrate access. ओके, एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में वो जो साइज एंड शेप उसका सेम नहीं होगा विथ सबस्ट्रेट, वो क्या करेगा, वो अदर देन एक्टिव साइट व्हिच इज एन एलोस्टेरिक साइट, वो एक एलोस्टेरिक साइट में आके बाइंड कर लेगा, तो रिजल्टिंग एक्टिव साइट का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, सो दैट सबस्ट्रेट वो आके बाइंड नहीं कर पाएगा. ओके, तुम देख सकते हो ये एक लॉक एंड की मैकेनिज्म. ओके, एक्टिव साइट की जो शेप है एंड सबस्ट्रेट की शेप वो कॉम्प्लीमेंट करेगा बोथ. ओके, दे विल कॉम्प्लीमेंट द शेप सो दैट एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा. तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होगा, वो इनहिबिटिंग जो मॉलिक्यूल है वो एक एलोस्टेरिक साइट में बाइंड कर लेगा, सो दैट वो एक्टिव साइट का शेप में वो बाइंड नहीं कर पाएगा, एंड रिजल्टिंग प्रोडक्ट भी फॉर्म नहीं हो पाएगा. ओके, लास्ट वन इज फीडबैक इनहिबिशन, जो कि ओवर प्रोडक्शन, प्रोडक्ट का ओवर प्रोडक्शन को वो प्रिवेंट करता है. दैट मीन्स अगर प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म होगा, देन ये एक फीडबैक देगा इसमें, जो कि ओके, सो क्या हो गया, द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन क्या हो गया, जो एंजाइम ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा सबस्ट्रेट को, एंड एंजाइम it will attract the substrate to its active site, and chemical reaction होगा इसमें, chemical reaction form होके ये enzyme substrate complex form करेगा. okay, then the combination formed by an enzyme and the substrate is known as what, enzyme substrate complex. okay, then majority of enzyme, they are what, they are proteins. okay, so one enzyme which is RNA, which is made up of RNA, which is known as what, all enzymes are proteins except ribozymes. This is a potent question. Except ribozyme, all enzymes are protein. okay, ribozymes क्या होता है, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड एंजाइम से डिराइव होता है. ओके, राइबोन्यूक्लिक एसिड व्हिच इज आरएनए, आरएनए से डिराइव होता है क्या, राइबोजाइम्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
explain the process of gene. The best possible answer is to know the central dogma. Okay, best one is central dogma. अगर हम जीन को समझने के लिए हमें central dogma समझना पड़ेगा. First question you will get here. Name the scientist who proposed central dogma. First question. The answer is central dogma किसने propose किया था? He is Francis Crick. Okay, तुम वाटसन एंड क्रिक मॉडल पढ़े होगे डीएनए स्ट्रक्चर में. सो वो जो क्रिक, फ्रांसिस क्रिक, वो ही पोस्टुलेट दिए थे सेंट्रल डोग्मा. ओके, सेंट्रल डोग्मा इट रिवॉल्व्स अराउंड द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए एंड प्रोटीन्स फ्रॉम आरएनए. ओके, you will see, you know the process of replication. What is replication? The formation of DNA from DNA. Okay, DNA से DNA फॉर्म होगा with the process of replication. Replication जो कि यूकैरियोट्स में अलग है and प्रोकैरियोट्स में अलग है. That means the few steps are different. Okay, तो इसमें क्या होगा? DNA से DNA फॉर्म होगा. Then in the process of transcription, transcription में RNA will form from DNA. Okay, DNA से RNA फॉर्म होगा with the process of transcription. Transcription, then what is reverse transcription? Reverse transcription जो कि देखा जाता है viruses like retroviruses. Okay, किसमें देखा जाता है ये? retrovirus. retrovirus का जीनोम जो होता है वो एक आरएनए जीनोम है. ओके, सो आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट होके वो डीएनए फॉर्म करेगा. देन डीएनए से वो जो इन्फेक्टेड मॉलिक्यूल्स और इन्फेक्टेड प्रोटीन्स फॉर्म होगा. ओके, सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज सीन इन रेट्रोवायरस. इट इज ए पोटेंट क्वेश्चन अगेन. एंड ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डीएनए टू आरएनए. ओके, यहाँ पे जो फ्रांसिस क्रिक लिखा है ना मैंने, you can also remember the year. In 1958 he proposed central dogma. Okay, then what is translation? Translation means the formation of protein from RNA. प्रोटीन जो कि लाइक जो भी हमारा रिएक्शन या फिर हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें क्या चाहिए? प्रोटीन्स चाहिए. So last product is protein. It is formed by the process of translation. Translation means formation of RNA. That means conversion of RNA to protein. Okay. So you can also remember the scientist name, the year, then what is transcription, what is translation, what is replication, and what is reverse transcription. And reverse transcription is seen in retroviruses. These are the potent questions in this segment. Fourth one, the next question is, what is Hardy-Weinberg equilibrium? Okay, you can see. Okay, you can see the definition first. First, Hardy-Weinberg equilibrium ये स्टेट यही करता है दैट एक इवोल्यूशनरी फोर्स अगर नहीं होगा, ओके, अगर एक इवोल्यूशनरी फोर्स नहीं होगा, देन एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन तक जो अलील या फिर जीनोटाइप होगा वो कांस्टेंट रहेगा. दैट मींस देयर विल बी नो चेंज इन द अलील और जीनोटाइप फ्रॉम वन जनरेशन टू another generation in the absence of evolutionary forces. Okay, so evolutionary forces, you can see the Hardy-Weinberg equilibrium is a principle in population genetics that describes the condition under which the allele and genotype frequency in a population remain constant. Okay, this is the main point. It will be constant in the absence of evolutionary forces. अगर एक evolutionary force नहीं होगा, then genotype one generation से another generation तक, I mean next generation तक जीनोटाइप और एलील में कुछ चेंजेस नहीं देखे जाएंगे. ओके, सो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए.
what are the conditions for Hardy-Weinberg equilibrium? First one is there should be no mutation. There should not be any mutation. First condition. Okay. That means जो जीनोटाइप पूल होगा, जो जीन पूल होगा, दिस इज ए जीन पूल, इसमें कुछ न्यू एलील्स इंट्रोड्यूस नहीं होंगे, या फिर जो जीन पूल में जो एग्जिस्टिंग एलील होंगे उसमें भी कोई ऑल्टरेशन नहीं देखा जाएगा. दैट मीन्स देयर विल बी नो म्यूटेशन. दैट मीन्स कुछ न्यू एलील जो कि इंट्रोड्यूस नहीं होंगे एंड जो एग्जिस्टिंग एलील है उसमें भी कुछ ऑल्टरेशन नहीं देखा जाएगा. ओके. First condition is no mutation. Okay, these are the potent question. That means option में ये रहेगा that which one of these is not a condition for Hardy-Weinberg equilibrium. Okay, first one is इसमें mutation नहीं होना चाहिए. Second one is random mating होना चाहिए. That means mating occur randomly with respect to gene. Second one is no gene flow. Okay, एक gene pool में कुछ माइग्रेशन नहीं होगा. माइग्रेशन मीन्स इमिग्रेशन या फिर एमिग्रेशन ऑफ डिफरेंट एलील नहीं होगा इसमें. ओके, तो नो माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल इनटू और आउट ऑफ द पॉपुलेशन. एक पॉपुलेशन में कुछ माइग्रेशन, दैट मीन्स कुछ इमिग्रेशन भी नहीं होगा एंड कुछ इमिग्रेशन भी नहीं होगा. सो द नो जीन फ्लो, द जीन पूल विल बी कांस्टेंट. फोर्थ वन इज इनफाइनाइट पॉपुलेशन साइज. ओके, अगर एक पॉपुलेशन सफिशिएंटली लार्ज होगा देन उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट प्रिवेंट होगा. दैट विल लीड टू Hardy-Weinberg equilibrium. ओके, सो फोर्थ वन इज इनफाइनाइट पॉपुलेशन साइज. फिफ्थ वन इज नो नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है? रिप्रोडक्टिवली जो फिट होता है वो नेचर उसे सिलेक्ट करता है एंड वो फर्दर कंटिन्यू करता है उसका जेनरेशन. ओके, तो नेचुरल सिलेक्शन अगर नहीं होगा दैट मीन्स ऑल जीनोटाइप वल्नरेबल हो या फिर रिप्रोडक्टिवली फिट हो या फिर अनफिट हो, सारे जीनोटाइप दे विल हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन. ओके, देन ओनली Hardy-Weinberg equilibrium will be seen. Okay, next, again, first one is no mutation, second one is random mating होना चाहिए, third one is there should be no gene flow, fourth one is infinite population, fifth one is no natural selection. Okay, this is Hardy-Weinberg equilibrium principle and condition. Then abhi now we'll see the equation. First, इक्वेशन में अगर तुम वन इज पी वन इज क्यू, व्हाट इज पी? इट इज द डोमिनेंट एलील. ओके, जैसे कि तुम एक फ्लावर कलर में, ओके, डोमिनेंट इज रेड, रिसेसिव इज व्हाइट. ओके, दिस वन इज एन एग्जांपल. दिस इज अ एग्जांपल. वन इज पी वन इज क्यू. पी इज द डोमिनेंट एलील. Okay, that means it will express in homozygous condition as well as heterozygous condition. What is Q? Q is the frequency. This is the frequency of dominant allele. Q is the frequency of recessive allele. That means it will express only under homozygous condition. Okay, so PP, agar P is a dominant allele for height, then PP is tall, PQ is also tall, QQ is known as dwarf. Okay, so first equation is P, the frequency of dominant allele plus the frequency of recessive allele is always 1. Okay, where P is the frequency of dominant allele and Q is the frequency of recessive allele. Next equation is genotype frequency. This is the allele frequency. Okay, allele is P and Q. What is the genotype? Tall or dwarf? This is the genotype. Okay,
no, tall and dwarf, that is phenotype. Genotype means it is homozygous or heterozygous. This is the genotype. Phenotype means it is tall or dwarf. So genotype frequency will obtain अगर हम both side p plus q equal to 1. अगर हम both side square कर लेते हैं, then we know p plus q whole square equal to p square plus 2pq plus q square. Okay, so here p square. What is p square? P square is the frequency of homozygous dominant genotype. Okay, p square means pp. It is pp. It is homozygous. That means both allele are equal or same. It is homozygous. It is dominant. And the genotype is pp. Okay, what is 2pq? pq means p is different. P and q both are different. That means it is heterozygous. The condition is heterozygous. So 2pq is the frequency of heterozygous genotype. And what is q square? Q square is a frequency. It is a homozygous condition, as we all know. Okay, which is QQ. This is homozygous condition, but it is recessive genotype. Here you can see dwarf. Dwarf is a recessive character. So homozygous recessive genotype. Here you can see this is Hardy-Weinberg principle. That means P square is the frequency of homozygous genotype plus the frequency of heterozygous genotype, that is 2pq plus q square, which is the frequency of heterozygous recessive genotype, is always equal to 1. Okay. Now we will see the purpose. Hardy-Weinberg equilibrium ये कहता है that अगर एक्चुअली ये एक मेजर, ये एक बेसलाइन है टू मेजर अगर आगे जाके या फिर फ्यूचर में लाइक इवोल्यूशन होगा या नहीं एक पॉपुलेशन में. ओके, इट विल बी मेजर्ड बाय Hardy-Weinberg equilibrium or Hardy-Weinberg equation or principle. Okay, so Hardy-Weinberg principle provides a baseline to measure whether or not a evolutionary forces are acting on a population. That means अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा, अगर कुछ भी डेविएशन आएगा इक्विलिब्रियम से, then we will know कुछ evolutionary forces है. And what are the evolutionary forces? First is selection. क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए we have seen that there should be no natural selection. अगर सिलेक्शन होगा then it is a evolutionary force. Okay, first one is selection. Second one is genetic drift. Here you can see infinite population size हम इसलिए लेते थे that to prevent genetic drift. That means genetic drift is a evolutionary force. Okay. Third one is gene flow. Here we have seen to maintain equilibrium there should be no gene flow. अगर gene flow होगा then it is a evolutionary force. That means equilibrium maintain नहीं होगा. Last one, okay, selection, genetic drift and genetic flow. Okay, these three are what? They are influencing the population. That means आगे जाके population में evolution देखा जाएगा. Okay, these are the evolutionary forces, right? Okay, and this also it is a hotspot topic जहाँ से तुम expect कर सकते हो that question it will be asked from this equation and they will ask what is p square, what is 2pq and what is the significance of q square and what are the conditions for Hardy-Weinberg equilibrium. Okay, these are the questions you can expect in your particular exam. Next question we have explain primary and secondary immune response. Okay, we know we have immunity to fight against foreign particles or disease causing organism. We have immunity. Then what is primary immunity? Primary immunity means अगर first take antigen, okay, they are the foreign particles. जब first time एक antigen से like एक antigen जब first time हमारे body में enter करेगा then it will lead to primary immune response. And
प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में वी नो वी हैव lymphocyte. Two type of lymphocyte. One is B lymphocyte. One is T lymphocyte. Okay. And we also know that our immunity has memory. Okay. Then अगर फर्दर वही एंटीजन अगर हमारे बॉडी में एंटर करेगा देन हमारा इम्यूनिटी उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा एंड उसे एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा एंड वो एंटीजन को खत्म कर लेगा. ओके. सो इम्यून रिस्पॉन्स वी हैव मेमोरी. सो बी लिम्फोसाइट जब एक एंटीजन से टकराएगा या फिर फर्स्ट टाइम जब एंटीजन एक्सपोजर होगा देन बी लिम्फोसाइट इट विल लीड टू इफेक्टर सेल एंड मेमोरी सेल. ओके. इफेक्टर सेल क्या करेगा? बी लिम्फोसाइट आगे जाके इट विल लीड टू प्लाज्मा सेल. प्लाज्मा सेल it will produce antibody are the defensive mechanism. Okay. और defensive cell ये defense करेगा by reacting with antigen. So B lymphocyte वो mature होके plasma cell form करेगा and plasma cell it will release or secrete antibody and antigen antibody reaction होके फिर antigen खत्म होगा. Right. So you can see here the difference table. First, the primary immune response it occurs as a result of primary contact with an antigen. जब antigen first time हमारे body में enter करेगा then it will lead to primary immune response. Then antibody form होने के लिए कुछ time लगेगा. Okay, right? So antigen जब enter करेगा body में then it will interact with B lymphocyte and B lymphocyte फिर mature होके plasma cell form करेगा. Then plasma cell antibody release करेगा. Then antibody will interact with antigen and and this process it will take 7 to 10 days. Okay. 7 से 10 दिन के बाद हमें एंटीबॉडी जो लेवल में वो पीक देखने मिलेगा. Okay. Next one is the prolonged period is required to establish immunity. Prolonged period क्यों चाहिए? Because antibody form होने के लिए वो particular antigen के against antibody form होने के लिए time लगेगा. That is 7 to 10 days लगेगा. That's why prolonged period is required. Fourth one is there is rapid decline in antibody level. Once antibody antigen के साथ interact कर लेगा then rapidly वो number decline करने लगेगा. Okay. Next one is it appears mainly in lymph node and spleen. Secondary immune response क्या होगा? Then जब subsequent antigen same antigen अगर दूसरी बार या फिर तीसरी बार अगर बॉडी में एंटर करेगा then secondary immune response हमारा लीड करेगा. Okay. It occurs as a result of second and subsequent contact with the same antigen. Okay. Because our immunity has memory. Antibody level कब पिक करेगा इसमें? Okay. जैसे कि उसके पास हमारे immunity के पास हमारे immune system के पास memory है. That's why यहाँ पे जल्दी ही antigen produce हो जाएगा. That means it will take 3 to 5 days. It establishes immunity in a shorter time. यहाँ पे ज्यादा टाइम लगता था एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने के लिए, यहाँ पे शॉर्टर टाइम लगेगा. देन एंटीबॉडी लेवल रिमेन हाई फॉर लॉन्गर पीरियड. यहाँ पे रैपिडली डिक्लाइन हो जाता था नंबर, बट यहाँ पे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में यू विल सी द एंटीबॉडी लेवल रिमेन्स हाई फॉर ए लॉन्गर पीरियड. द लास्ट वन इज ये लिम्फ नोड एंड स्प्लीन में देखा जाता था एंड ये एडिशनल बोन मैरो में भी देखा जाएगा. You can see this graph. This is primary immune response. That means it is an antigen. Okay. Antigen जब initial exposure होगा antigen का हमारे body में, then it will take first. This is the antibody level. Okay. Antibody level first कुछ increase नहीं हुआ था. This phase is known as
लैग फेज। लैग फेज में क्या होता है? लैग फेज में the time taken to produce antibody, the time between antigen exposure and antibody production. Okay, जो time इसमें इसके बीच रहेगा, that is known as lag phase. You can see 7 to 10 days में you'll see a peak in the antibody number. Okay, and वो rapidly decline हो जाएगा. Okay, then same antigen अगर हम second या फिर subsequent exposure होगा same antigen का, then you will see there is a shorter lag period. That means antibody already memory होगा हमारा immunity में, वो antibody immediately produce करेगा plasma cell से. Then you will see a peak within 3 to 5 days. Then you can see यहाँ पे एंटीबॉडी जो लेवल है वो रैपिडली डिक्लाइन ना होके वो ज्यादा टाइम तक वो लेवल इंक्रीज होके रहता है. ओके, दिस इज प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स. सो नेक्स्ट अप वी हैव द फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम. यू नो, एंडोक्राइन सिस्टम it consists of, first is endocrine glands and gland release hormones. Okay, hormones क्या होता है? It is a chemical messenger. Okay, जो कि blood के through travel करता है and target organ में जाके वो अपना effect show करता है. Okay, you can see here what are the glands? What are the endocrine glands? One is present in hypothalamus, one is pituitary gland, next is pineal gland, fourth is here thyroid gland and parathyroid glands. In the sternum level we have thymus, then pancreas, which is a endocrine gland as well as a exocrine gland. This is a mixed gland. Next, kidney के ऊपर adrenal gland, then female में ovary and placenta during pregnancy, and male में testicles. Okay, these are the endocrine glands. तुम 11th में वो endocrine system में पढ़े होंगे that कौन सी gland कौन सा hormone produce करता है and what are the roles of that particular hormone in our system. Okay, now see the function of entire endocrine system. First, hormone secretion. It is the primary and the main function is hormone secretion. Hormone secretion होता है gland में. Endocrine system consists of glands. It includes glands such as pituitary gland, thyroid gland, adrenal gland, and pancreas. Here we have seen all the glands present in our body. Okay. Then hormones. The gland will release hormone. These are the chemical messenger that travels. Okay. Next, first one is hormone secretion. This is the important function of endocrine system. Second one is regulation of metabolism. जैसे कि thyroid hormone. Okay. This is the, you can see this is the thyroid gland and parathyroid gland. Thyroid gland, it will secrete thyroid hormones, that is T3 and T4. Okay, thyrocalcitonin. Okay, and parathyroid gland, it will secrete PTH hormone. The thyroid hormones, it will control the rate of metabolism and energy production. That means हमारा thyroid hormone या फिर जो thyroxine है वो BMR भी रेगुलेट करेगा, एंड बीएमआर मींस द बीएमआर अगर वो रेगुलेट करेगा देन एनर्जी प्रोडक्शन को भी वो कंट्रोल करेगा, एंड मेटाबॉलिज्म के रेट को, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो जाए या फिर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो जाए, एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करेगा. जैसे कि ये हो गया थायराइड हार्मोन. सेकेंड वन इज इंसुलिन एंड ग्लूकागन. वी नो आवर ब्लड शुगर लेवल. ओके,
ग्लूकागॉन ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है. इट इंक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल. किस तरह से इंक्रीज करता है? इट ग्लाइकोजन को लाइसिस करता है. दैट मीन ग्लाइकोजेनोलाइसिस. ओके. या फिर ग्लूकोज प्रोडक्शन करता है. दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस. ग्लाइकोजेनोलाइसिस. लाइसिस मीन्स टूटना. ओके. ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा, which will lead to increase blood sugar level, and glucose produce होगा by the process of gluconeogenesis, and it will lead to increase in blood sugar level. Insulin, it will the action is opposite to glucagon. That means ये gluconeogenesis को inhibit करेगा and glycogenolysis को inhibit करेगा. Okay. So glucagon, it will increase the blood sugar level, and insulin, it will decrease the blood sugar level. So दोनों मिलके क्या करेंगे? They will regulate the blood sugar level. Okay. ये हो गया regulation of metabolism. Next function is growth and development. We know growth hormone. Okay. जो कि growth के लिए important है. It will stimulate growth, cell reproduction and regeneration. Growth hormone, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ओके, वो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करेगा. ओके. पिट्यूटरी ग्लैंड में ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होगा. FSH, LH, ऑक्सीटोसिन, देन ADH, ये सब पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है. देन ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ के लिए ग्रोथ हार्मोन चाहिए, एंड डेवलपमेंट के लिए जो कि सेक्स हार्मोन, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करने के लिए सेक्स हार्मोन चाहिए. व्हाट आर द सेक्स हार्मोन्स? इट इज एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन, it will lead to increase in male character, and estrogen female character को introduce करें. Okay. Sex hormone, they will influence the sexual development and reproductive function. Okay. Growth and development हो गया. Then fourth function is homeostasis. Homeostasis means जो balance बना रहेगा ना, that process is known as homeostasis. First is fluid and electrolytic balance. किस तरह से? वो जो ADH and you know aldosterone. Aldosterone क्या करता है? वो DCT से Na plus and H2O reabsorb कर लेता है ब्लड में, so that इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रहे. एंड स्ट्रेस में कॉर्टिसोल, जो कि एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है, ये स्ट्रेस मैनेज करने के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके. एंड इट आल्सो मैनेज इन्फ्लेमेशन. व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन इज द टिश्यू रिस्पॉन्स टुवर्ड्स इंजुरी. फिफ्थ फंक्शन इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन जैसे कि सेक्स हार्मोन, ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को कंट्रोल करता है. मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स को कंट्रोल करता है, एंड स्पर्म प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है. व्हाट आर द सेक्स हार्मोन्स हियर? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, FSH, LH, androgen, these all are sex hormones. And pregnancy hormone, जो कि एंडोमेट्रियम लेयर को टूटने से प्रिवेंट करेगा, that is progesterone. It is also known as pregnancy hormone. Last one is behavior and mood. जो न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड हॉर्मोन्स होते हैं, वो मूड मूड स्विंग्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, या फिर सिर्फ स्लीप पैटर्न हमारा, जो कि ये पिनियल ग्लैंड, एंड ओवरऑल इमोशनल वेलबीइंग को ये इन्फ्लुएंस करते हैं. ओके. सो व्हाट आर द फंक्शंस? अगेन, वन इज हार्मोन सिक्रेशन, second one is regulation and metabolism, growth and development, homeostasis, reproduction
and sixth one is behavior and mood. Okay. Next question is type of muscle tissue and explain them. Okay. You know we have three types of muscle tissue. First one is skeletal muscle. Second one is smooth muscle. And third one is cardiac muscle. Okay. Skeletal muscle, as the name suggests, skeletal muscle कहाँ पे present होगा? Skeletal में, skeletal muscle system में. Okay. Then you can see this one is leg, right? The location is leg, skeletal system. Okay. It attached to skeleton. Types of cell you can see, it is the striated. Okay. Striated cell, tubular and multinucleated. More than one nucleus is present. That means the fibers, these are the fibers. They are striated. Okay, they are striated. They are tubular. You can see it is tubular and it is multinucleated. More than one nucleus is present. Okay. What is the action? If it is voluntary or involuntary, it is voluntary in action. Okay. We can control the movement, that is voluntary, and where we cannot control the movement, that's known as involuntary. Okay. Next, you can see the histology. That means under the microscope, the structure is like this. Next muscle type is known as smooth muscle. You can see what is this? This is our internal organs. Okay. It usually, the smooth muscles usually covers the wall of internal organ. Internal organ के जो wall में we can see smooth muscles. Okay. You can see the type of cell. This is non-striated. No striation is present. No striation. It is non-striated, spindle shaped. This is spindle shaped and uninucleate. That means one cell carry one nucleus. It is uninucleated. Here you can see one cell carries more than one nucleus. It is multinucleated. Then can we control the movement? No. So it is known as involuntary muscle. Okay. We cannot control the internal organ movement, right? Can we? No. That's why it is known as involuntary muscle. You can see the type of cell, and under the microscope, it is like this. Third type of muscle is known as cardiac muscle. Cardiac means we know it means heart. That means the covering wall of heart is by cardiac muscles. Okay. The type of cell you can see. First, you can see the striation. So the fibers are striated. Can you see the branching? Can you see the branching? Yes, it is branched. The skeletal muscles and smooth muscles, you cannot see any branching. Okay, so they are unbranched fibers. They have unbranched fibers. But the cardiac muscles, you can see the branching. That's why the fibers are first. You can see the striation. That's why the fibers are striated. Then the fibers are branched, and it is also uninucleated. Okay, nucleus के साथ smooth muscles and cardiac muscles, they are same. That means they are uninucleated. And if we see the striation, then skeletal muscle and cardiac muscles are same because they both are striated. Okay, you can see the location is heart. You can also see the histology. That means the under the microscope how the cells are visible. You can see the branching. This is branching. You can see only one nucleus, so they are uninucleated. Fine. So skeletal muscles, smooth muscle and cardiac muscle.
the important question here are the Streisand. They can ask which one is voluntary, which one is involuntary. We cannot control the heart muscles. Okay, so it is involuntary. We also cannot control the internal organ muscle. That's why it's also involuntary. But skeletal muscles we can control. That means running के time या फिर walking के time we can control the rate. हमें जोर से like run करना है या फिर धीरे बस चलना है. We can control the muscles movement. That's why it is voluntary. Okay. We see the location. Now we know the type of cells and their characteristic and histology. Next question is, what is ecological succession? Okay. First we will see what is succession. Okay. What is succession? एक जो नेचर का जो हैबिटेट होगा, हैबिटेट किस तरह के लाइक दो तरह के हैबिटेट वी नो नाउ, व्हिच इज वन इज वाटर हैबिटेट, दैट मींस वेट एरियाज. सेकंड वन इज ड्राई हैबिटेट, ड्राई एरियाज. ओके. अगर सक्सेशन जो कि प्लांट का सक्सेशन अगर हाइड्रक या फिर वेट एरिया में हो उसे बोलते हैं हम हाइड्रक सक्सेशन. अगर ये ड्राई एरिया में होता है देन इट्स नोन एज जेराक सक्सेशन. ओके. सो हाइड्रक सक्सेशन में it takes place in the wet areas and the successional series progress from hydric to mesic, hydric to mesic. Okay. succession में both wet areas या फिर hydric succession and jerac succession में जो succession में जो successional series होगा it will proceed to mesic. What do you mean by mesic? It is neither too dry not too wet. That means ये ज्यादा ड्राई भी नहीं होगा, ज्यादा वेट भी नहीं होगा. The medium portion is known as mesic. तो सक्सेशन हाइड्रक में भी मेजिक एंड जेराक में भी मेजिक. ओके. नाउ विल सी व्हाट इज सक्सेशन. सक्सेशन में फर्स्ट एरिया जो एरिया प्रेजेंट होगा उसमें सिर्फ बेयर रॉक होंगे. यू कैन नॉट सी एनी काइंड ऑफ प्लांट इन दैट प्लेस. जो बेयर रॉक होंगे उसमें फर्स्ट एक पायोनियर स्पेसीज आएगा. पायोनियर स्पेसीज मींस द स्पेसीज दैट इन्वेड द बेयर लैंड. ओके. जो कि फर्स्ट स्पेसीज इज नोन एज पायोनियर स्पेसीज. ओके. इन प्राइमरी सक्सेशन अगर रॉक में अगर प्राइमरी सक्सेशन हो रहा है देन रॉक में लाइकेंस प्रेजेंट होंगे एंड लाइकेंस दे सीक्रेट एसिड. कि एसिड क्या करेगा वो रॉक को डिसॉल्व कर लेगा. ओके. सो वो जो एसिड वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा. ओके. लाइकेंस जो एसिड प्रोड्यूस करेंगे वो बेयर रॉक को डिसॉल्व करके इट विल फॉर्म सॉइल. राइट. देन लेटर small plants. First small plants are bryophyte. ओके. जो कि जिसे कि लाइक स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल ही चाहिए. ओके. देन सॉइल के बाद लाइकेंस एसिड प्रोड्यूस करेगा जो कि रॉक को डिसॉल्व करके सॉइल फॉर्मेशन होगा उसमें एंड इट विल लीड टू ब्रायोफाइट्स. दे नीड स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल टू होल्ड. ओके. देन विथ टाइम क्या क्या सक्सेड होगा? हायर प्लांट्स, देन मोर स्टेजेस लाइक स्टेबल क्लाइमस. लास्ट वन इज यू कैन सी ग्रासेस, देन ग्रासेस, श्रब्स, देन उसके बाद ट्रीज प्रोड्यूस होंगे एंड द स्टेबल क्लाइमैक्स community is forest. Climax community means the end succession. The succession result, which is a stable community, is known as climax community. And the climax community in
in this succession is forest. Okay, then now we'll see secondary succession. Secondary succession means अगर एक जगह प्लांट प्रेजेंट होगा कहीं भी, लाइक एंशिएंट में प्लांट प्रेजेंट होंगे, देन ड्यू टू सम रीजन जैसे कि फायर हो गया या फिर कुछ भी ऐसे बाढ़ वगैरह हो गया, अगर कोई भी स्पेसीज बाद में प्रेजेंट नहीं होगा लेकिन एक टाइम वहां पे प्लांट स्पेसीज प्रेजेंट होगा. ओके, जैसे कि डिफोरेस्टेशन हो गया या फिर फायरिंग हो गया फॉरेस्ट में, तो यहाँ पे कुछ भी जो प्लांट स्पेसीज नहीं बचेंगे, राइट. लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, ऑलरेडी सॉइल प्रेजेंट होगा. वी नो सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, इट इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस. ओके, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद सॉइल फॉर्म होता है. ओके, सेकेंडरी सक्सेशन में सॉइल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, बट जो कि प्राइमरी सक्सेशन में सॉइल बेयर रॉक को वेदरिंग एंड डिसॉल्व करके फॉर्म होता है. सो प्राइमरी सक्सेशन it takes long year, but the secondary succession it takes few year because soil is already present. Okay, so then pioneer species आएंगे, then pioneer species के बाद grasses and perennials, grasses, shrubs, pines, then it will lead to again the climax community which is forest. Okay, इकोलॉजिकल सक्सेशन समझ में आएगा. ओके, प्राइमरी सक्सेशन जो कि वाटर में प्रेजेंट होगा, वहां पे क्या होगा, यू कैन सी वाटर में जो पायोनियर स्पेसीज, इट इज इन वाटर. पायोनियर स्पेसीज इट विल लीड टू स्मॉल, यहाँ पे ब्रायोफाइट्स प्रेजेंट हो गए. पायोनियर स्पेसीज के बाद यहाँ पे स्मॉल फाइटो प्लैंक्टन्स, then it will be replaced by rooted submerged plant, then rooted free floating plant, then उसके बाद free floating angiosperm, rooted not free floating, rooted floating, then उसके बाद free floating angiosperm, then reed swamp. You have to remember the successor. Okay, reed swamp, then we have marsh meadow, then we have scrub, then finally tree. Okay, ecological succession, it is xeric succession, and this portion is hydrac succession. Okay, both lead to a mesic condition which is a forest. Forest is a mesic condition. Okay, this much for today. Thank you.